Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of plebiscitary democracy. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ plebiscitary democracy. तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ plebiscitary democracy. Well, plebiscitary democracy is a form of a democratic rule that operates through an unmediated link between the ruler and the ruled established by the plebiscite. So this allows the public to express their views on political issues directly. Thus, this is a species of a direct or participatory democracy. However, this type of democracy is often criticized because of the scope it offers for demagogues. Demagogues are basically political leaders who manipulate the masses through oratory and appeal to their prejudices and passions. This type of democracy amounts to little more than a system of mass acclamation that gives dictatorship a populist gloss. So, when we talk about plebiscitary democracy, then we need to understand first the meaning of plebiscite. Now, plebiscite is basically a kind of a referendum wherein a vote by electorate determining the public opinion on various questions of national importance. So plebiscite is basically kind of an election, kind of a referendum which takes place in certain democracies, wherein it is a direct link between the ruler and the people. And these kinds of democracy, like plebiscitary democracy, allows the public to express their views on political issues directly. So whenever and wherever we have plebiscitary democracy being practiced, example in Switzerland, they have this plebiscitary democracy, a direct democracy, a direct link between the ruler and the people. And whenever the country has to take any major important decision, especially with reference to the people and the national security or national importance, they directly allow public to express their views on various political issues. They conduct the referendums, or they conduct the opinion poll in simple words, and it allows people a chance to directly involve whenever the issues are directly connected to the national importance or a society by and large. So these kinds of democracy could be called as direct democracy or participatory democracy. Now, here we also have to understand that this type of democracy is often been criticized because it gives enough scope, or it's offer enough scope for a demagogues. Now, who are these demagogues? Demagogues are these basically some political leaders who have the power of oratory skill, who have the power of mass followers, and they tend to manipulate such kinds of democracy because of the power which they have, and they always tend to misguide people, especially when we see such kinds of demagogues in the third world countries, developing countries, or underdeveloping countries. And such kind of demagogues becomes more powerful because the democratic institutions have been compromised, democratic institutions have been suppressed, or sometimes democratic institutions are very weak, they have not evolved the way they are supposed to be, and therefore we find such kind of demagogues only in the third world countries. Now, when we compare these to developed countries where the democracy has become very powerful, democracies we have become very matured, you will never going to find such kind of demagogues there. So often you'll find demagogues, political leaders who always manipulate the masses through their oratory or through their passion,
in the third world countries, developing countries, and to some extent underdeveloping countries. So therefore, plebiscitary democracy directly runs on the concept of direct democracy, where people are being given chance to connect to the political issues. People are being given enough space to express their views on political issues directly by participating in the referendum or the plebiscites. So therefore, this type of democracy amounts to little more than a system of mass acclamation that gives dictatorship a populist gloss. So these kinds of democracies, or these types of democracies, actually do little more to the system. And because of this plebiscitary democracy, because of the demagogues, because of these political leaders who always manipulate the masses or tend to manipulate the masses, it actually covers up the dictatorship, or it covers the dictator into a populist leader. And this is the disadvantage of plebiscitary democracy, because people by and large are in small number, state is small in number, and you always tend to influence or manipulate the masses, and thus therefore plebiscitary democracy has its own disadvantage. But as a concept, as we were talking about, plebiscitary democracy is nothing but a form of a democratic rule that operates through direct link between the ruler and the people, and people participate, or people established the democracy through plebiscites or through referendum. So this is all about the concept of plebiscitary democracy. जब हम plebiscitary democracy के बारे में बोलते हैं या फिर समझना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी सिस्टम है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है, तो ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है प्लेबिसिटरी, ये डायरेक्टली काम करती है। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है सरकार और लोगों के बीच में, और लोग हमेशा उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये एस्टैब्लिश किया है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेबिसाइट या फिर रेफरेंडम, मतलब वोटिंग कराना हर एक चीज़ को लेके या फिर लोगों का ओपिनियन मांगना। फॉर एग्जांपल, प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी और रेफरेंडम डेमोक्रेसी हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। वहाँ पर सिस्टम ऐसी है कि जब भी कोई भी सरकार बड़ा कदम उठाने से पहले लोगों के बीच जाती है, लोगों को अवगत कराते हैं, लोगों को उस विषय के बारे में या फिर उस इशू के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देती है। सो दे बेसिकली वांट पीपल्स ओपिनियन ऑन सर्टेन डिसीजन, बिकॉज एंड ऑफ द डे whatever national government is going to take a decision, it will affect people by and large। तो वो लोगों का ओपिनियन चाहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता है, एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है ऑन सर्टन इश्यूज, और वो ओपिनियन बाद में सरकार का ओपिनियन बनता है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पर लोगों को एक चांस मिलता है अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ या फिर जो भी उनकी कुछ पब्लिक व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करने के लिए, और ये सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके सोसाइटी में उसको हैंडल वो डिफरेंटली करते हैं। लोगों को पूछने के बाद ही वो कुछ डिसीजन लेते हैं। सो देयरफॉर plebiscitary democracy allows the public to express their views on the political issues directly, and these issues are basically national importance। so ये भी एक तरह का एक डायरेक्ट या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकती है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अमूमन देखा है कि जो प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी होती है वो क्रिटिसाइज भी किया गया है, बिकॉज द काइंड ऑफ अ स्कोप इट ऑफर्स टू द डेमोगॉग्स। और ये डेमोगॉग्स कौन है? डेमोगॉग्स वही पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बहुत शातिर होते हैं, बहुत होशियार रहते हैं और उनके पास पावर रहता है लोगों को मैनिपुलेट करने का।
और वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को थ्रू अपनी ऑरेटरी स्पीच, मतलब जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो लोगों को आकर्षित करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था जहाँ पर है, जहाँ सरकार हर एक चीज़ लोगों से पूछती है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने स्पीचेस से, अपने आव भाव या फिर अपने पैशन से, या फिर जो उनके पास आकर्षित करने की जो चीज़ रहती है उससे वो लोगों को आकर्षित करके उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और मैनिपुलेट करने के साथ साथ लोग उस लीडर के पीछे एकदम डट के खड़े रहेंगे, बिकॉज दैट पॉलिटिकल लीडर have already manipulated these people through his oratory speech। मतलब एक तरह का ब्रेन वॉशिंग करना, और ब्रेन वॉशिंग करने के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ सही चीज़ें गलत लगने लगती है या फिर कुछ गलत चीज़ें सही भी लगने लगती है। यही इसका नेगेटिव पॉइंट है एज फार एज प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी का। अदरवाइज अगर हम देखेंगे दूसरी साइड से, प्लेबिसाइट डेमोक्रेसी और प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सरकार डायरेक्टली लोगों के बीच जाती है, लोगों को पूछती है जो बहुत इश्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, उसको अगर सॉल्व करना है, और वो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और तभी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसका दुरुपयोग या उसका क्रिटिसिज्म ये भी है। और इसीलिए कभी कभी इस तरह की डेमोक्रेसी में हमें डेमोक्रेटिक डिक्टेटर भी दिखने को मिलता है, who had the power of influencing people, और बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी कभी कभी डिक्टेटर भी एक बहुत पॉपुलर लीडर बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी। लेट मी रिपीट अगेन, प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक रूल that operates through an unmediated, that means direct link between the ruler and the ruled, between the ruler and the people. And this form of a democracy is established by the concept of plebiscitary or plebiscite या फिर referendum. So this is all about the concept of plebiscitary democracy. I hope you have understood this concept, and if you have any questions or queries, then do write it in the comment box below. Thank you very much for watching this tutorial, and I will see you soon in the next tutorial. Till then, take care.